Hello students. So welcome back to Informatics channel, Informatics India. Now dear students, all the MC aspirants must be very vigilant because now the countdown has started. Maharashtra CET, the first exam for MCA entrance exam is out now, and the date is out as 23rd of March 2025, which falls on Sunday. So it will be an online exam as declared by the Maharashtra CET exam authorities, and this is the website or the page where you can find the same notification. And students, now अब जो आज का जो मेरा lecture है, it will be more concerned about कि महाराष्ट्र CET का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली 25 तारीख को है, 23 तारीख को है, 23 मार्च को, तो उसमें सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम देना है, क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है ताकि हम एक अच्छे लेवल पर महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम दे दें. एंड यू ऑल नो दैट महाराष्ट्र CET इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपके पास सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी आ जाती है एंड मैक्सिमम टॉप यूनिवर्सिटीज़ बॉम्बे की एंड पुणे की, मुंबई की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आ जाते हैं जिसमें कि आप एडमिशन लेने के लिए डायरेक्टली महाराष्ट्र का एग्ज़ाम देते हो, राइट. So eligibility criteria. Now eligibility of MCA of Maharashtra CET, it states that the student should be Indian national first of all, and secondly all the students in the bachelor's degree can apply for the Maharashtra CET exam with minimum of 50% in graduation, right. That means चाहे आप BCA कर रहे हो, BA कर रहे हो, BVoc कर रहे हो, BSc कर रहे हो, any student is eligible to appear for this exam for Maharashtra CET, and there is no limitation कि आपके पास +2 में मैथ्स होना चाहिए, right. काफ़ी बच्चे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम मैथ्स इज कंपल्सरी इन +2, so they haven't written anything such that कि मैथ्स आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. All the students with minimum of graduation, even अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं, presently you are in the 5th semester, you can apply on the basis of 2nd semester. और स्टूडेंट जैसे अभी फॉर्म आ जाएगा आउट, आई विल बी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको फॉर्म भरना कैसे है. सो इसीलिए मैं कहती हूँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया, जिसमें कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. नेक्स्ट कम द सिलेबस. हमें पढ़ना क्या है, महाराष्ट्र का पेपर तो आ गया, सो हमें पढ़ना क्या है. सो महाराष्ट्र CET के एग्जाम में बच्चों 4 सेक्शंस आएंगे आपको. पहला आपको आएगा मैथमेटिक्स and stats, which is of 30 questions. Next section will be of logical abstract reasoning, which will be of 30 questions. Next will be of computers of 20 questions and English of 20 questions. Total मिला के students आपके पास 100 questions आ गए, and for doing this 100 questions you will be given 90 minutes for doing the questions and 200 marks का पेपर होगा. That means each question it carries 2 marks and 90 minutes 100 questions are there and online paper will be there. और अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, डिटेल्ड सिलेबस में मैथ्स रीजनिंग क्वांट में क्या आएगा. सो हेयर कम्स द डिटेल्ड सिलेबस. फर्स्टली ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये सिलेबस डीपली पढ़ सकते हैं. मैथ्स के सिलेबस में दे हैव गिवन अर्थमेटिक ऑल्सो. दैट मीन्स जो मैथ्स का सिलेबस होगा इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 9th 10th 11th 12th मैथ्स, राइट. सो इसमें आपके पास एल्जेब्रा आ जाएगा, तो फुल एल्जेब्रा दे हैव गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. दे हैव मेंशन्ड स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलरली बिकॉज इन्होंने सिलेबस में ही क्या लाइक दे हैव मेंशन्ड द सब्जेक्ट एज स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट्स आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन अर्थमेटिक इज इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स पेपर विच कंसिस्ट ऑफ द 9th 10th मैथ्स, वेयर the chapters are like time and work, time and distance, problems on ages, right, and ratio proportion, mensuration. So this is the syllabus for mathematics, and this math syllabus it comprises of 30 questions. Then next is syllabus of logical reasoning. Logical reasoning में आपके पास they have said कि they will be giving the passage type questions like you can say syllogism, sitting arrangement, puzzles. Don't miss that part because that is the major part. Then comes English. In English basically it will be more on like you can say 2 comprehensions will be there in front of you. Apart from the comprehensions they will be asking the questions on vocabulary, fill in the blanks, errors. So all the mixed type of questions will be there in English. So this is the whole syllabi, and then finally comes computers.
सो कंप्यूटर्स का सिलेबस भी इन्होंने बहुत वास्टली दिया हुआ है. इन कंप्यूटर्स बेसिकली they have mentioned the fundamentals of computers, basics of computers organization, processing unit, CPU structure, input output devices, right. Then apart from this, there is binary arithmetic. Then you can say they have given the computer architecture, C language, and when they come to operating system, they have written just basics of the operating system they will be asking in the examinations. So again, you can pause the video and you can read the syllabus very deeply कि आपको computers में करना क्या है. So 30 questions of computers will be asked. Regarding the test information, I have told you up that they will be asking, it will be online mode paper, CBT paper, and they will be asking you around about 100 questions, 30 plus 30 plus 20 plus 20. 4 sections will be there in the examinations, and finally each question it contains 2 marks, but there is no negative marking in the paper, so that's very good for you. But तुक्के मत लगाइएगा because this paper is on the percentile basis. आपकी accuracy बहुत matter करती है कि आपका rank क्या आएगा. ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्के लगा दें. ट्राई करो कि मोर एक्यूरेट पेपर करो, राइट. अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए 0 मार्क्स कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा आपका. तो फाइनली 100 नंबर का पेपर आएगा, सॉरी 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा. 90 मिनट दिए जाएंगे आपको. एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, बट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर. And this slide I have basically made very particularly because last time ये problem आया था बच्चों के पास कि वो अपना verification proof लेके जाना भूल गए थे. कोई राशन कार्ड ले गया, and again these type of verification proofs are not allowed in Maharashtra CET paper. You should have a proper photo ID proof. Say आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं, और ये आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं आप. आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर होना चाहिए, और एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड भी होना चाहिए, राइट. उसके बाद आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं. मेनी आईडी प्रूफ्स आर देयर विच यू कैन टेक फॉर द फोटो आईडी योर वेरिफिकेशन एट द सेंटर. So these all are acceptable. So again you can pause the video and you can see whichever is comfortable for you to carry during the examination. You can carry that verification proof. And Infomats being a leader since 1999, we have been producing the top rankers of Maharashtra CET every year since 1999. And this year also in 2024, Ananya ranked 1 Maharashtra CET. That means he has get 100 percentiler. Abhinav again ranked 1 Maharashtra CET 2023, 100 percentiler. Then in 2022, 99.99 percentile. Varun 2021, Harman 99.99 percentile, and so many students are there. For the more results, you can log into our Infomats website, infomatsonline.com, where you can find our results from 1999 till date 2024. And the students, Infomats is not only a pioneer institute for producing the top rankers in Maharashtra. Infomats produced the top ranks in NIMSET. Last year also, we have produced 10th rank of NIMSET. We have been producing the top ranks of CVT PG, Maharashtra CET, VIT Vellore, Punjab University Chandigarh, and many other state level examinations. So being a leader in MCA entrance, we provide you 100% guaranteed results at Infomats with the best quality, and the best quality only comes by the best teachers. And our teachers are those who are having the expertise of minimum of 27-year experience. We are having in our faculty Mr. Grover, Sudhir Grover. He is a maths faculty for the last 27 years. Again, a director of Infomats also. Myself, Arpana Grover, I teach you English for the last 25 years. Saurabh Soni sir, he is an aptitude faculty with us for the last 15 years. And a lot many teachers are there in our team who are always there with you to help you regarding any of the problems you face during any examinations. 24/7, these teachers are available online and offline for you to rectify your problems and give you the best results in your master's examinations.
And being a leader every year producing the top ranks is one of our passion. And definitely Informats is that place where your dreams comes to reality. So dear students, be in touch with us always at on the YouTube channel, that is Informats India, and we are having our own app by the name of Course Edu. The links of all the app as well as Instagram channel, Telegram channel are given in the description of this video. You can follow us and subscribe us on the YouTube so that you are in regular touch with us, because very soon we are going to start with Maharashtra and CUET PG online program free of cost on YouTube. So start preparing, it's very high time now. We are going to start with the new batches for CUET PG, NIMSET, Punjab University Chandigarh and Maharashtra CET very from December mid. And all the students who are aspiring for MCA entrance 2025 and 26, they can contact us on the below given numbers. And that's all about today's video. So be in touch with us on our YouTube channel. Thank you and all the best.